नमस्कार। आप सभी लोग अपने घरों पर सकुशल स्वस्थ रूप से होंगे तथा आप सभी लोग ये जो वैश्विक महाबीमारी कोरोना है इसकी वजह से जो भी परेशानियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए प्रॉपर जीवन यापन कर रहे होंगे तथा नीडी पर्सन्स की मदद भी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, कामना है। अब बात करते हैं जैसे कि कल yesterday we have talked about the population interaction in which we have talked about the different conditions, that is generally the different types of the interactions, that is mutualism, competition, predations, parasitism, commensalism and amencialism, right, in which we have talked about the predations. Later on the second one which comes, that is very important, that is called the competitions, right. Evenly everybody know that there is a large competition in all organisms day by day. So evenly with the help of this competition there are lots of things which can be necessaries. We can say the competition is the type of interaction where both species suffer, means both species can be get suffer, maybe damaged or benefited, anything. But species suffer means they can be get some harmness, right. And we can say it can be always exist between the same species, we can say the interspecific competition, or the different species, that is called the intraspecific competition. You have seen different organisms like deer, means if we talk about the deers and their families and their species, they are always compete for the grasses, for the food, for the habitat with the same species. But on the other hand, the different interspecific organism means some other herbivore can also compete with deer for the same requirement. So we can say this is called the interspecific and the intraspecific competition. And we can say this competition occurs due to the limited source between the closely related species. This type of competition can be occurs because of the limited sources of the materials or substances between the closely related species. Even anything, if we can talk about some specific things, that we can say the with the an example that in shallow South American lakes, especially in shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food zooplankton. अगर हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका अमेरिका की जो लेक है, सैलो लेक, उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लेमिंगोज होती है, बर्ड्स होती है, उसके और फिशेस के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि दोनों के दोनों फीड करते हैं किस पे, जू प्लांट कीटोन्स पे। और जब दोनों ही उस पर जू प्लांट कीटोन्स पे फीड करेंगे तो इससे डेफिनेट कहीं ना कहीं फूड की कमी होगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है। इवनली वी कैन से another thing that in the interspecific competition we can see especially the feeding efficiency of the one species might be reduced due to the interfering the inhibitory presence of the other species, although the resources are evident, right. We can say generally if we want to take the example of this interspecific, we can say that especially you can known आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन गैलापागोस आइसलैंड, जब गैलापागोस आइसलैंड में गोट्स का इंट्रोडक्शन किया गया या इंट्रोड्यूस किए गई, राइट, तो उस समय उस गैलापागोस आइसलैंड पे जो एबिंगडन टोर्टाइस स्पीसीज रहती थी वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई, right, within a decades. Why it happened so? Because of the overgrazing, overbrowsing efficiency of the goats की जो एफिशिएंसी थी वो टोर्टोइस की अपेक्षा ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या होगा, वो सारे के सारे जो एनिमल्स थे, जो एबिंगडन टोर्टोइस थे, वो वहाँ से डिसअपियर हो गए। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वन। एंड वी कैन से there is a very important thing will comes, that is we can say what is competitive release। आखिर competitive release होता क्या है, किसे कहेंगे हम competitive release? तो competitive release generally it is a phenomenon of a species whose distribution is restricted
टू अ स्मॉल एरिया। हम कह सकते हैं कि जनरली जो कंपटीशन रिलीज है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द competing species is experimentally removed। मीन्स अगर हम शॉर्टकट्स में कहना चाहें तो कह सकते हैं द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरियाज ड्यू टू कम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज। मीन्स किसी छोटे एरिया पे जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेट है उसमें जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो जो आपकी इन्फीरियर स्पीसीज होगी, जो कम मात्रा में स्पीसीज होगी, वो वहाँ से उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, वहाँ से उसको भगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं क्या, कंपटीशन रिलीज। इवनली वी कैन से देयर इज अनदर थिंग, देयर इज ए साइंटिस्ट who explained according to Gauss competitive exclusion principle. Gauss was a scientist. He give an principles or things about this competitions, right? So he explained that two closely related species compete for the same resources cannot coexist. उन्होंने ये कहा कि दो सेम स्पीसीज को, ऐसी दो स्पीसीज जो आपस में बिल्कुल सेम हो, जिनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम हो, दे कैन नॉट बी सर्वाइव इन द सेम प्लेसेस टुगेदर। वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्यों, ऐसा क्यों, वाई इट इज पॉसिबल? जनरली वी कैन से इट इज हैपन्स बिकॉज द क्लोजली रिलेटेड species have the common requirements of their life. They can be always require all the things which is very common in their life. So they never be done such type of things. Means they can be always, and that competition can give the such things. Means according to the Gauss competition exclusion principles, he states that the two closely related species competing for the same resources cannot coexist in any places. So we can say indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually by the superior one. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्पिटिटिव रिलीज में भी ये कंडीशन बनती है कि जो स्पीसीज कम मात्रा में होगी, जो स्पीसीज कम होगी किसी प्लेस पे, किसी एरिया पे, वहाँ पर जो द स्पीसीज विच इज मोर दे कैन बी एलिमिनेटेड दैट वन। इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू द गॉस, उसमें व्हेन द सेम स्पीसीज आर कॉमन इन विच कंडीशन वी कैन से द inferior can be eliminated by the superior ones। इसमें जो सेम काइंड ऑफ स्पीसीज होंगी वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज वेरी नेसेसरी, राइट। अगर हम आगे बात करते हैं कि रिसोर्सेस और पार्टीशनिंग, राइट, हाउ वी कैन बी done such type of things according to the scientist MacArthur, right? He explains some specific thing about this one. Means we can say the mode of interaction between the two species in which one species is parasites depends on the other species, but this is the parasitism. But according to the MacArthur, he explained that this resource partitioning is the phenomenon in which species facing competition might evolve mechanism, right? They promotes coexistence. Means जब कभी भी इवोल्यूशन के समय पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन रहता है, उस समय अगर ऑर्गेनिज्म compete करता है तो उनके बीच में they can be capable to promote the coexistence, उनके बीच में coexistence possible हो सकता है। MacArthur shows a 5 closely related species, rebellers living on the same tree, were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in their foraging activities. Means coexisting तभी पॉसिबल है कंपटीशन के होने के बावजूद भी जब उनका थोड़ा सा नेचर आपस में या इवोल्यूशन का डिफरेंसेस रहता है। In that conditions, those organisms can be capable to avoid their competitions from each other.
right? So generally competition can also help for the organisms for the survival, for the development in definite areas in different places, right? Then we have to talk about next, that is the parasitism. We can talk about this parasitism means, especially it is the interaction when one species is parasite and depend on the other species, that is called the host for the food and shelter. Means we can say, especially in the case of this parasitism, we can say the mode of interaction between two species in which one species is parasite depend on the other one, and the other species is host for food, shelter, and other processes of their life. It means that the parasite can always capable to damage the host one, right? In this process, one organism is benefited while the other is being harmed host, so it is known as parasitism. ये इसकी पहचान होती है पैरासिटिज्म की. Evenly we can say, if what are the different adaptations of parasites, we can say the parasite have evolved to be host specific in such a manner that both host and parasite tend to evolve. We can say the parasite have evolved to host specific in such manner that both host and parasite tend to coevolve. दोनों के दोनों को एक साथ इवोल्यूट होना चाहिए तो इजीली हो सकता है. इसके अलावा हम कह सकते हैं दे कैन एबल टू लॉस अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. मीन्स जो एडेप्टेशन है, जो उसमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं पैरासिटिक कंडीशन में पैरासाइट के, तो वो क्या होते हैं, वो इवॉल्व नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट. इवनली द प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स मीन्स वी कैन से दीज पैरासाइट्स हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन in their body due to which they can capable to do the structures with the help of their conditions, so they can be capable to develop such type of things in their places. So we can say especially these parasites can capable to have some specific type of structures in their body due to which we can say they can easily done such type of things in their conditions, right. Evenly we can say these parasites have hooks and suckers in their body. Means you can say especially these adhesive organs can always help them for attachment with their host, right. As you have seen, especially we talk about the a parasite organism that is called petromyzon, hagfish, which has a sucker in their body and they can be just sucked to the attached to the body of the whales and some host organisms where they can be start to suck their blood and then nutritive material from there. So with the help of such process they can capable to done such type of things. Evenly we can say these parasites can lose their digestive system. Means they do not have any digestive system because they can always take the digested material from their host, so there is no need to be digest such type of things. Evenly we can say they have high reproductive capacity. Means the parasite have adaptation that they can capable to highly reproduction capability in their body one. So we can say such type of things is very necessary for them. Evenly if we can talk about their life cycles, means the life cycle of some parasite is very complex where one or more intermediate host or vector to be facilitate parasitations are presented, right. We can say especially if we talk about, right, the reduce the survival of the host means parasite can be always effects on their host and that उसकी survivability को कम कर देते हैं. Evenly the growth and reproduction rate are reduces, जो parasite की growth रहती है उसको भी कम कर सकते हैं. Such a way they can capable to do such type of things. Evenly we can say if we talk about the life cycles especially about this parasite, what will happen if we take some examples like the human liver fluke depends on the two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. Means
Liver fluke is a parasite, but it still needed the two hosts for its life cycle. Means it cannot be capable to survive without single host one. So it needed the snail as well as the fishes for the completing of the life cycle. Evenly, you all are familiar with another one that is called malaria parasite. In that condition also, the malaria parasite can also shows the dual life cycle where this plasmodium needs a vector mosquito to complete its life cycle. Plasmodium needs the human blood as well as the this mosquito for its life cycle, right? Because one phase of its life cycle, reproductive phase, can be take place in the mosquito anopheles, as well as the asexual mode of reproduction of this malaria parasite is always take place into the human body. So we can say it is very necessary for its survival. Evenly we can say the most of the parasite harm the host by reducing the survival conditions. Means we can say that how these parasite can affect the host. Most of the host can be damaged, can be die, can be reduce their survival condition, can be reduce their growth, can be reduce their reproductions because of the parasite. We can say these are very dangerous for the host one. We can say reduces in the population density of the physically weak, means especially the population density of the host can be also very weak. So on the basis of their action, on the basis of their some other conditions, these parasites can be classified in different categories, right? We can say there is a especially another one, that is we can say they can be given a parasite that is called ectoparasite and the endoparasite. Means ectoparasite, we can say generally you can say ectoparasite depends on the external surface of the host, right? Or you can also explain that the parasite which live in outside external surface of the host body, right? In that conditions they are known as the ectoparasite. As we can say lies on the human ticks, right? ह्यूमन के सिर पे बालों में आपने देखे होंगे जुएं पड़ जाते हैं. आखिर ये जुएं कहाँ से आते हैं? तो दे विल ऑल विल एक्ट लाइक ए एक्टो पैरासाइट्स. आपने अपने पपीज पे, आपने डोमेस्टिक डॉग पे देखे होंगे कि उनकी बॉडी पे भी स्मॉल टिक्स होते हैं, राइट? ये भी एक्टो पैरासाइट्स होते हैं. आपने कसकुटा देखा होगा, अमरबेल देखी होगी, पेड़ के ऊपर चिपकी रहती है, हरी ग्रीनिश एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो अ एक्टो parasite, because they can always depend on their host from the external body surfaces areas only. So we can say such type of thing is known as ectoparasite. There is another thing that is called the endoparasite. Endoparasite, especially if we talk about the endoparasite, means the organisms or these parasite can always live inside the host body, right? At a different sites, they can be live in liver, they can be in kidneys, on lungs and different organs, right? आपने देखा होगा आपके पेट में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक, राउंड वॉर्म्स हो जाते हैं, फिर आप मेडिसिन खाते हैं तो निकल जाते हैं. तो दे आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट्स, राइट? क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में रह करके आपके न्यूट्रिटिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उससे अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं. So they will act like a endoparasite, sorry, right? For example, you can say tapeworm, liver fluke, plasmodium. These all are the endoparasite. And as I have already told you, there's the life cycle of endoparasite are more complex because of their extreme specializations. रियली जो एक्टोपैरासाइट होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी साइकिल इजी होती है, लेकिन जो इंडोपैरासाइट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हॉर्स के ऊपर, तो उनकी जो लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. एक स्पेशल एग्जांपल मिलता है जिसे कहते हैं हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लर्निंग, दैट यू कैन से दिस ब्रूड पैरासिटिज्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Why it is most important? Because it is a unique one. I think everybody have listened that the
one organism means parasite lays its egg in the nest of another organism called the brood parasitism. स्पेशली जब कोई एक ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो अपने एग अपने होस्ट या अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में दे देता है, उसे कहते हैं क्या? ब्रूड पैरासिटिज्म. जनरली यू हैव familiar with this one that we can say especially the egg of cuckoos, जो कोयल होती है, right, they can the egg of cuckoo and the crow resemble in the size and color to reduce the chances to crow. means जो आपके क्रो के एग होते हैं और जो कुकू के यानी कोयल के जो एग होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं, साइज में भी कलर में भी, जिस वजह से जो क्रो होता है इट कैन नॉट कैपेबल टू डिटेक्ट सच टाइप ऑफ एग्स, राइट. तो इसलिए क्या होता है कि वो उसको आसानी से पहचान नहीं पाता है, राइट. एंड सो डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स मीन्स जो आपके कुकूज के एग्स होते हैं वो क्रो पहचान नहीं पाता है, तो इजेक्टिंग देम आउट फ्रॉम द नेस्ट, इसलिए जब पहचान नहीं पाएगा तो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा. दैट्स वाई दिस कुकू कैन ऑलवेज लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, बिकॉज क्रो उनको अपने अंडे समझ करके ईजिली उनको क्या करता है? डेवलप ऑपरेशन करता है. लेकिन कोयल खासियत क्या करती है? कोयल कौवे के अंडों को गिरा देती है नेस्ट से अधिकतर, ठीक. तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द पैरासिटिज्म ऑफ द that one. So students, you all must prepare your notes from all these interactions, and as I have told you about all these interactions easily, right? So you must learn them properly, right? And there is sometimes 2 or 3 times there is a question can be asked about canals alignment. It is also competitions in which the you can रॉकी सी कोस्ट में स्कॉटलैंड में स्पेशली देखिएगा लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर ब्रेनिकल्स बेंचेस डोमिनेट द इंटरमीडिएट एरियाज इंक्लूड द स्मॉलर ब्रेंकल्स. स्पेशली जैसे मैंने आपको वही बताया था कंपटीशन के तहत में जब जो इन्फीरियर होती है वो हमेशा कोएग्जिस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन अगर मान लीजिए सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रेंकल्स में भी स्कॉटलैंड के में देखा गया है एग्जाम्पल इसका, तो वहाँ पे भी क्या होता है ऑर्गेनिजम्स दूसरे को एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उसको अपने वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं. तो यू मस्ट कंप्लीट, यू मस्ट रीड ऑल दिस प्रीडेशंस, कंपटीशंस एंड पैरासिटिज्म. यू मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू